Okay, hi dosto. Today we will be continuing CompTIA A plus training chapter number 19, which is related to security, network security, cyber security. Training is conducted by Loyal Tech and Security. Um, Make sure you like and subscribe the videos if it's helpful to you. अगर कोई भी questions or concerns हो, make sure you type them in the comments or in the chat window. So today हम continue करेंगे chapter number 19, which is a cyber security chapter. Hopefully this one is going to be a little bit, I feel it's going to be a little bit more interesting um, because of it being a security chapter. हम ऑब्जेक्टिव जो कवर करेंगे हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगे कॉमन प्रिवेंशन मेथड्स कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगे डिफरेंसेस ऑफ बेसिक विंडोज ओएस सिक्योरिटी सेटिंग्स डिप्लॉय एंड इन्फोर्स सिक्योरिटी बेस्ट practices to secure a workstation, various methods of securing mobile devices, use appropriate data destruction and disposal methods, and secure SOHO wireless and wired networks. So common prevention methods क्या है? जो basic जो prevention methods है, we know physical security. फिजिकल सिक्योरिटी से मुराद यहाँ पे ये है कि आपका कोई सर्वर है, उसको ऐसे नहीं कि कोई सर्वर बाहर पड़ा हुआ है कोई भी उठा के निकल गया, तो उसको सिक्योर करने के लिए इसको फिजिकल सिक्योरिटी. डेटा सेंटर्स जो होते हैं उसमें पुलिस होती है, सिक्योरिटी होती है, फिजिकल सिक्योरिटी होती है डेटा सेंटर्स में. डिजिटल सिक्योरिटी बेसिकली वो होती है, एंड आई थिंक आगे जाके इसके अंदर वो लोग और भी एक्सप्लेन करेंगे, बट ये चार मेथड्स आप अभी जान लें: फिजिकल सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी, यूजर एजुकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज. मतलब लोगों को कम से कम एक्सेस होना चाहिए हाई टारगेट्स का, only on needed basis, and we will cover most of this in later slides. So this is a physical security for a laptop. A key aspect of access control involves physical binaries, physical barriers, multiply barrier systems, several physical barriers. So ये जो है एक लॉक मैकेनिज्म होता है. मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स के अंदर एक छोटा सा सुराख दिया हुआ होता है, एंड दिस पीस जो है वो उसमें हार्ड वायर्ड होता है, एंड यू कैन कनेक्ट इट इनटू दैट लैपटॉप एंड डेस्कटॉप. काफ़ी सिस्टम्स के अंदर ये होता है, and this would be considered a physical security. Physical security के अंदर एक दूसरी term usually is used, it's called tailgating, which tailgating जो है refers to being so close to someone when they enter a building that you are able to come in right behind them without needing to use a key, a card or any other security device. tailgating का मकसद ये है कि जैसे डेटा सेंटर है उसके अंदर हम जब जाते हैं हम स्कैन करते हैं आईडी, की पैस या जो भी है, स्कैन करते हैं. एक आईडी मैंने स्कैन की, जिसकी आईडी है वो अंदर दाखिल हो गया. टेल गेटिंग का मतलब ये है कि मैंने एक आईडी स्कैन की और 3-4 लोग और 1-2 लोग एंटर हो गए एक ही स्कैन के ऊपर. दैट इज़ नॉट ए सिक्योरिटी बिकॉज टेल गेटिंग मीन्स कि समवन इज़ लाइक वॉकिंग सो क्लोज टू यू, आपके पीछे पीछे. मूवीज़ में देखते होंगे हम, एक दरवाज़ा खोला और दूसरा भी घुस गया. दैट्स टेलगेटिंग. Now, physical security includes securing physical documents, passwords and shredding them. मतलब उसको फाड़ देने के, उसको डिस्ट्रॉय कर देने के. बायोमेट्रिक्स जो फिंगर स्कैनिंग होती है, बैजेस जो हम बैज स्कैन करते हैं, की फॉब्स, छोटे छोटे वो की फॉब्स आते हैं. की फॉब की मैं क्या एग्जांपल दूँ आपको? आपको पता है, हाँ, गाड़ी की जो की फॉब्स होती है वो, वेरी गुड. हाँ, गाड़ी के जो रिमोट होते हैं दोज आर की फॉब्स. एंड देन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड 2FA और MFA. ठीक है. Usually, dumpster diving is a common problem that puts systems at risk when thrown in dumpster. Biometric devices are physical characteristics to identify the user. अमूमन जो है लोग जो है ना डंपस्टर डाइविंग में जाते हैं, they just literally look through the dumpster to see if they can find any computers, any leftover hard drives,
key fobs or anything like that which still has the information from previous. Key fobs are named after the chains that used to hold pocket watches to clothes. वो जो छोटी छोटी वॉचेस होती थी ना जो कपड़े में लटकती थी, की फॉब्स उसके नेम से ईजाद हुआ है. They are security devices that you carry with you. They display a randomly generated code that you can then use for authentication. Basically, the key fob is synchronized with a server and they both seeded to generate the same sequence of pseudo random numbers. The server knows it's if you input the right number at the right time. So basically जो छोटा सा एक फॉब होता है उसके अंदर है ना इट्स नंबर जनरेट होता है. नंबर कैसे जनरेट होता है कि वो नंबर जो है वो सर्वर के नंबर के साथ सिंक्रोनाइज होता है. एंड दिस इज ऑल इट रन्स एन एल्गोरिथम बिहाइंड इट. वो जो नंबर जब सिंक होता है सर्वर के साथ देन ऑल द अदर फ्यूचर generated numbers on this key fob are already recognized by the server. So मैं अगर की फॉब के अंदर if I get first number and if someone else gets that number is going to change within 30 seconds anyway. So that's one of the part of the physical security of key fobs. Multi-factor authentication हम सब जानते ही हैं. Multi-factor authentication is any time more than one item or a one factor is needed to authenticate a user. This is known as a multi-factor authentication. That is, for example, ATM requires a card and a PIN. That's a multi-factor authentication. Microsoft download sites require you to enter a username and password and then check your email for a specific code. Checking for the specific code, that is a second, or it's called a multi-factor authentication. Or sometimes you आप अपने email में जाते हैं and then you get a cell phone text message. जो cell phone पे text message आता है, that is also a form of multi-factor authentication. Now, physical security, RFID badges and smart cards, RSA token, and privacy filters. Smart cards जो है is a type of badge or card that gives you access to resources including building, parking lots, and computers. It contains information about your identity and access privileges. Each area or computer has a card scanner or a reader in which you insert your card. जैसे हमारे पास हम शॉपराइट जाते हैं, शॉपराइट का एक छोटा सा कार्ड होता है, ठीक है. इट्स आई नो वो कार्ड जो है वो किसी को हमें सिक्योरिटी का एक्सेस नहीं देता है, बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट दैट वो जो कार्ड है इट हैज़ ए barcode or it has a chip inside, either or. Most of them have chips, like the new ones. So the chip has all your information in it. जो भी information है, your names, आपके password for you to be able to access into the building. तो वो जो कार्ड है those are called smart cards. वो स्मार्ट कार्ड को आप कहीं पे टच करें, उसकी RFID की स्कैनिंग होती है, वो आप टच करें और वो बिल्डिंग के दरवाजे खुल जाएंगे. टच करें, गवर्नमेंट की बिल्डिंग के अंदर आप दाखिल हो सकते हैं. दैट्स अ स्मार्ट कार्ड. ओके. And I just want to clear up what the RFID is. RFID is called the radio frequency identification, considered RFID. Is the wireless no contact technology used with the cards and their accompanying reader. तो एक उसके लिए होता है रीडर की मशीन और होता है कार्ड. कार्ड को आप रीडर के ऊपर टच करें तो जो रीडर है कार्ड में से सारी इंफॉर्मेशन पुल करके कंप्यूटर को दे देगा एंड देन कंप्यूटर विल डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन. Now, physical tokens or RSA tokens are anything that a user must have on them to access network resources, and they are often associated with devices that enable the user to generate a one-time password, authenticating their identity. Secure ID from RSA is one of the best known examples. जो ये आपको दिख रही है डिवाइस, ये this is called RSA Secure ID. इसके ऊपर जो ये नंबर आप देख रहे हैं, this number is only valid for 30 seconds or 1 minute depending on जो उनकी सेटिंग्स हुई होगी. अब सोचने की बात ये है कि ये जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल समझे ये मुझे बैंक अकाउंट एक्सेस करना है ऑनलाइन. हाँ, मैं बैंक अकाउंट में मैंने अपना यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, फिर वो मुझे पूछेगा अपना टोकन का नंबर डालो. तो इसके अंदर मैं बटन दबाऊंगा तो नया नंबर जनरेट होगा. अब ये जो जनरेट हो रहा है नंबर, वो मेरी बैंक को कैसे पता चलेगा कि ये सही है नंबर?
कभी सोचा है वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि ये जो नंबर है, ये जो डिवाइस है, वो सिंक्रोनाइज्ड हुआ है बैंक के सर्वर के साथ बेस्ड ऑन योर यूजर नेम. दिस इज कॉल्ड टाइम टाइम बेस्ड टोकन्स. तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 11 AM को सर्वर ने आप इस डिवाइस को सर्वर के पास लेके उसको सिंक्रोनाइज कर दिया सर्वर के साथ. 11 AM को वो और ये दोनों 11 AM को सिंक्रोनाइज हो गए. अब 11 AM के बाद जितने भी कोड्स इसके अंदर इशू होंगे इस डिवाइस में, वो एक एल्गोरिथम के थ्रू इशू होते हैं, और इसमें लाखों कोड्स जनरेट होंगे, और लाखों लाखों जो कोड्स हैं वो सारे वैलिड हैं. वो सारे वैलिड हैं बेस्ड ऑन द टाइम. सो फॉर एग्जांपल सारे 11:30 होते हैं, तो कोड नंबर 1 2 3 4 5 6 वैलिड है. अभी सारे 11 से लेट्स से 11:33 हो गए. 11:30 थे तो 1 2 3 4 5 6 वॉज वैलिड बिकॉज इट्स द टाइम बेस्ड. 11:33 हुए तो 1 2 3 4 5 6 इज नॉट वैलिड एनी मोर. नाउ नया कोड जनरेट होगा, इट विल बी मे बी 10 11 12 13 14. यू सी. तो आपको every time you need to access your bank account, you need to press that button, that RSA secure ID. It's a button actually. You press that button and then you will get a new code on that screen. Then you put that number in and it will let you in. So this is a form of multi-factor as well as physical security. So these are very hard to crack. The reason why, अगर इसको क्रैक करना हो, किसी को हैक करना हो, आपको फिजिकली उस बंदे के पास जाके इसको चोरी करना पड़ेगा. ठीक है. अगर ये चोरी हो जाता है तो बहुत इजी है उनके अकाउंट में जाने का. तो इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, एज आई सेड. फिर दूसरा है प्राइवेसी फिल्टर्स. प्राइवेसी फिल्टर जो है आर आइदर फिल्म और ग्लास एड ऑन दैट आर प्लेस्ड ओवर अ मॉनिटर और लैपटॉप. स्क्रीन के ऊपर वो एक फिल्टर लगा देते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल सिक्योरिटी राइट नाउ, टू प्रिवेंट द डेटा ऑन द स्क्रीन फ्रॉम बीइंग रीडेबल व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड. सो एक फिल्टर आते हैं ब्लैक, जैसे जैसे हम चश्मे के कलर होते हैं ना अलग अलग, वैसे फिल्टर आते हैं ब्राउन ब्लैक अलग अलग. वो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के कंप्यूटर के ऊपर लगा दें, तो जो लोग साइड में से चल के जाएंगे या आपके पीछे भी खड़े होंगे एट अ डिस्टेंस, उनको दिखेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं. ओके. खाली जो आप बैठे हुए हैं स्ट्रेट सीधे उसके सामने बैठे हुए हैं, ओनली यू विल बी एबल टू सी दैट, नॉट अदर पीपल कैन नॉट सी दैट. कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है? सोशल इंजीनियरिंग एंड मैलवेयर. दीज आर वेरी बेसिक एंड कॉमन थ्रेट्स. सोशल इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग, इट इज अ प्रोसेस इन विच एन अटैकर अटेम्प्ट्स टू एक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट यू. सोशल इज अ सोशल मीडिया होता है. सोशल इंजीनियरिंग इट कम्स फ्रॉम सोशल मीडिया, मोस्ट ऑफ इट. कॉन्सेप्ट ये है, हैकर जो है दे विल एक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट यू फ्रॉम एवरीवेयर. एवरीवेयर मीनिंग सोशल मीडिया से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो भी है, ट्विटर, टिकटॉक, जो भी है, इट विल acquire information from these networks. Your network and system by social means, such as talking to people in the organization. They can do that. A social engineering attack may occur over the phone, by email, or in person. Social engineering का concept ये है कि to collect information about the person or the company or whatever thing you want to hack. So let's say if you are targeting someone or a hacker is targeting you, उसके अंदर जो हैकर है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालेगा. जो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है कि बंदे का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये बंदा रहता कहाँ पे है, ये करता क्या है, कौन सी स्कूल में गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन. दे आर टॉकिंग अबाउट फोन, ईमेल एंड पर्सन. फोन तो अब स्पैम कॉम कॉल्स कितने आते हैं, बट पीपल आर स्मार्ट दीज डेज. वो फ़ोन के ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते नहीं है. नहीं तो फ़ोन के ऊपर कॉल आते हैं कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम द IRS, योर अकाउंट इज़, यू ओ अस दिस मच मनी एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड वो सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगते हैं, कुछ लोग दे देते हैं. सो दैट्स ऑल्सो टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग ओवर द फोन. ईमेल के अंदर यू गेट लाइक स्पैम ईमेल्स, आप क्लिक करेंगे एंड देन दे विल गैदर सम इंफॉर्मेशन और योर कंप्यूटर कैन बी कॉम्प्रोमाइज दैट वे. इन पर्सन वो आपको
ओवरहर्ड करते हैं या सुनते हैं कि आप क्या करते हैं, आपके आपके नज़दीक ही रहते हैं, जस्ट टू कीप एन आई ऑन यू. In today's world, all of that is very hard. It doesn't happen because most of the things is available online. ये सब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सोशल मीडिया इतना ख़राब दलदल है. इट्स अ वर्स्ट थिंग टू हैव सोशल मीडिया is because every information for you is available on social media, especially on TikTok. TikTok is a major issue, security threat right now. Highly recommend, if anyone has TikTok, remove it from your phone right away. TikTok actually, ये जो एप्स हैं वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं आपके फ़ोन के ऊपर. वो बेसिकली करते क्या है, टिकटॉक स्पेशली, उनके अगर आप टर्म्स एंड एग्रीमेंट पढ़ेंगे ना, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वी विल गैदर दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर फ़ोन. कौन सी इन्फॉर्मेशन, आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आप सर्च में क्या लिखते हैं, आप किससे बात करते हैं, आप ईमेल क्या करते हैं, वो जो जितनी भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ना वो सब कैप्चर करते हैं और वो इनके लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है. हम तो पढ़ते ही नहीं है लीगल टर्म्स एंड कंडीशन, हम ओके कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़, राइट. तो दे look at all that data, so there is no privacy. That is social engineering. They gather the information and then जब time आता है then they attack. ठीक है. Malware on the other hand is a malicious invasive software install themselves without your consent. वो खुद ही इंस्टॉल हो जाते हैं आपके अप्रूवल के बगैर. वो यूज़र को ट्रिक करते हैं या समटाइम्स कि वो बटन दबाएं और वो इंस्टॉल हो जाए. दैट्स अनदर वे. एंड मेलवेयर के थ्रू दे कैन स्पाई ऑन व्हाट यू आर डूइंग. आप क्या टाइप करते हैं, एवरी की स्ट्रोक्स, आप जितने भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं वो सारे दे कैन कैप्चर दैट. मीनिंग आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर जा रहे हैं, आपने अपना यूज़र टाइप किया, यूज़र YUSER, जो भी आपने टाइप किया वो उनको मिल गया. फिर आपने अपना पासवर्ड टाइप किया, भले ने आपका पासवर्ड 1000 कैरेक्टर का क्यों ना हो, जितने भी कीवर्ड्स आपने टाइप किए वो सारे के सारे उनको मिल गए. तो डजेंट मैटर कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रांग है, अगर आपका कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड विद मेलवेयर देन वो पासवर्ड उसको डेफिनेटली मिल ही जाएगा. तो इसके अंदर प्रोटेक्शन फिर आती है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. क्योंकि मल्टी फैक्टर जो है, अगर वो कंप्यूटर के ऊपर ही कोड आपका सेव नहीं है मल्टी फैक्टर का, फ़ोन के ऊपर टैक्स आता है या वो RSA की ID है आपके पास, तो भले ना उनके पास पासवर्ड फर्स्ट स्टेप का क्रेडेंशियल्स आ गया पर सेकंड स्टेप की क्रेडेंशियल्स उनके पास नहीं है, सो वो लॉगिन नहीं हो सकेंगे. एंड होपफुली आपके बैंक या जो भी सिक्योरिटी है उसके अंदर दे कैन मेक यू अवेयर दैट समवन ट्राइड टू एक्सेस योर सिस्टम, चेंज द पासवर्ड सून, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. फर्दर सोशल इंजीनियरिंग के अंदर दे हैव फेक ईमेल्स, फेक कॉलर्स जो कि फ़ोन पे होती है. अनऑथोराइज्ड पर्सन्स अटेम्प्टिंग टू गेन एक्सेस टू बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. शोल्डर सर्फिंग, शोल्डर सर्फिंग क्या होता है, आप कोई यहाँ पे क्यूबिकल्स बने होते हैं ऑफिस के अंदर, तो क्यूबिकल्स के अंदर आप अपना कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं या कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हैं, पीछे से कोई खड़ा हुआ होकर सब देख रहा है, यू डोंट नो, आप तो काम कर रहे हैं एंड वो आपके पीछे खड़ा हुआ है और सब देख रहा है. दिस इज कॉल्ड शोल्डर सर्फिंग. ठीक है. फिशिंग, let me actually explain a little bit more on that first part, then I'll come back to the phishing. So social engineering के अंदर they explain a little bit more that it's a process in which an attacker attempts to acquire information about your network. Okay, we already covered that. Shoulder surfing is looking over at someone's screen or using a binoculars through a window at someone using their computer and gathering information. तो शोल्डर सर्फिंग एक्चुअली दूर से भी होती है. अगर आपके पास टेलीस्कोप हो या बिनोक्यूलर्स हो, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग या एक रूम से दूसरे रूम, अगर वो आप देख सकते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, देन या यू नीड एन एलिवेशन पॉइंट. समवन the looker needs to be on a higher elevation to look, but that can be done. Phishing, on the other hand, it looks like a legitimate websites asking for important information such as username and password, like a fake PayPal or a bank website but with long URL. Once you enter your credentials, the attacker can then use it to gain access to your account. Always check the URL on top. For example, bankofamerica.com, आपको ईमेल आता है कि बैंक ऑफ अमेरिका से ईमेल आया कि someone just took the money out of your account. बैंक ऑफ अमेरिका का लोगो होगा, सारी इंफॉर्मेशन भी होगी, and then it will say click here to log in and report the incident. आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, it will
आपको एक वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, जो कि वेबसाइट जो है वो बिल्कुल बैंक ऑफ अमेरिका जैसी ही लगेगी. दिस इज कॉल्ड फिशिंग. What identifies that it is a phishing website is you need to take a look at the URL. URL जो है ऊपर, उसके ऊपर वो बैंक ऑफ अमेरिका .com नहीं लिखा होगा, उस पर कुछ और URL होगा. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि दिस इज फेक. ओके. Now two forms of phishing exists: spear phishing and whaling. What is a spear phishing? Spear phishing is basically cuts through defense like a spear. Spear होता है ना छुरी जैसा, बस उसको ये याद रखें. स्पीयर फिशिंग जो है ना वो इट बेसिकली कट्स थ्रू ए डिफेंस लाइक अ स्पीयर. कोई भी आपका डिफेंस हो, फायरवॉल वायरवॉल जो भी हो, इट कट्स थ्रू दैट to get to the other end. The attacker uses information then that the target would be less likely to question because it appears to be coming from a trusted source. So same thing. इतना उनको legit बना देते हैं वो वेबसाइट को, या ईमेल को इतना legit लुक देते हैं कि you cannot tell that this is a fake website or email. That's a spear phishing. Whaling, for big users, Whaler identifies one person from whom they can gain all of the data that they want, usually a manager or business owners. So most of the time whaling जो है it happens to a high level CEOs, managers, finance department, sometimes HR also, जो जो हाई पोजीशन पे होते हैं. इवन टू सम IT people who's a मैनेजर के पास सारे इंडिविजुअल्स की एक्सेस होता है. तो उन हैकर को इसमें क्या फ़ायदा होता है, वो एक बंदे को हैक करते हैं तो उस हैकिंग के वजह से उनको सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है. सो फॉर इंस्टेंस हमारे कंपनी प्रीवियस कंपनी में ये इंसिडेंट हुआ था कि अकाउंट पेएबल का काम होता है जो पेमेंट्स करते हैं. अकाउंट पेएबल को एक ईमेल आई CEO से, उसी कंपनी के CEO से, कि you need to transfer $60,000 to this account immediately because we are waiting for a transaction whatever. Legit email came from the same user, जो CEO था उसी का ईमेल आया था. जैसे वो ईमेल टाइप करता था वैसे ही आया था, उसका सिग्नेचर सब कुछ, और $60,000 ट्रांसफ़र करने का बोल रहे थे. लकीली जो अकाउंट्स पेएबल वाले जो लोग थे, they were not aware of such ask, so they called instead of replying on the email. उन्होंने कॉल किया CEO को कि are you sure you want us to make the transfer, what is this for? So CEO said I don't know what you're talking about. तो उसके अंदर से पता चला कि this was a whaling attack. But not just that, the email itself of the CEO was compromised. That is how वो जो attacker है उसने actually CEO के email से ही email किया था. और and it was it was almost done, the transaction was gonna happen, so luckily they got saved with that. ठीक है. There's another form of attacks are called password attacks, which occur when an account is attacked repeatedly, also called as a brute force attack. This is accomplished by using applications known as password crackers, which send possible passwords to the account in a systematic manner. There are several types, जैसे मैंने अभी mention किया. Brute force attack, constantly वो attack करता रहता है, millions of password वो try करता है until एक कोई password right हो जाए. ब्रूट फोर्स अटैक की मैं आपको एग्जांपल दूंगा अगर हमारे पास टाइम होगा, तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑन लिनक्स. So brute force attacks is an attempt to guess passwords until a successful guess occurs. Set password rules such as increase complexity, expression, etc. तो ये brute force attack जो है वो constantly अटैक करता रहता है जब तक से एक्चुअल पासवर्ड उसको मिल ना जाए. और वो पासवर्ड कहाँ से क्रिएट करता है? पासवर्ड की लिस्ट आर पब्लिकली अवेलेबल, यू कैन गेट इट फॉर फ्री. पासवर्ड की लिस्ट इज अवेलेबल टू एनीवन. लेट्स शो यू रियल क्विक. ये देखें, ये है गिटहब के ऊपर पासवर्ड्स की लिस्ट. I can go here
I can download these are all password databases. Common credentials, कॉमन क्रेडेंशियल मतलब जो कॉमनली यूज क्रेडेंशियल है, जो लोग कॉमनली क्रेडेंशियल यूज करते हैं. क्रैक्ड हैशेस, ये वाले जो हैं हैशेस, दे आर ऑलरेडी क्रैक्ड. 4 ईयर पहले किसी ने अपलोड किए थे. सो वाईफाई के WPA पासवर्ड्स, these passwords, like you can just get these passwords very easily. देखिए 10 मिलियन पासवर्ड है इसके अंदर. 10 मिलियन पासवर्ड, 10 मिलियन पासवर्ड के अंदर से कोई एक पासवर्ड तो चलेगा शायद, अगर लोगों ने if people are not creative with their password, वो special character add नहीं कर रहे हैं, if they're not adding numbers and things like that. So let's say, and these are TXT, so let's say if I go in here, look at it, these are all the passwords. देख रहे हैं, देखें पासवर्ड, फिर कोई बंदे होते हैं वो डालता है. देखो ये सारे पासवर्ड है, ये कॉमनली यूज पासवर्ड है, लोग ऐसे ही डालते हैं. लोगों का माइंड ही ऐसा है. फुटबॉल, मंकी, यू नो, इसमें बहुत है. और अगर आप जाएंगे माइनक्राफ्ट, इस ये तो आई मीन यू हैव टू डाउनलोड द फाइल, यू कैन डाउनलोड इट, बट एनीवे इस फाइल के अंदर इतने सारे पासवर्ड्स हैं. वैसे ही आप देखें, देयर सो मेनी फाइल्स हियर, you can do so much. So this is called, based on these files we can initiate a brute force attack and crack passwords. Now when we talk about brute force attack, we say कि it takes is a regular computer to maybe 1 week to crack a password. What does that mean? It means कि कंप्यूटर की स्पीड कितनी तेज है कि वो 10 मिलियन पासवर्ड को बार बार ट्राई करता रहेगा. 10 million is actually not much when it comes to a computer checking this. 10 million is not much, but a regular computer will take them months sometimes. Supercomputer which sits in Japan and US would take them a day maybe. Not 10 million, even more than that. 10 million is not a big number, I'm just saying. But brute force attack would take that much. So हम जब पासवर्ड क्रिएट करते हैं, आप किसी वेबसाइट से पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो कि अच्छे पासवर्ड्स आपको गेस करके देते हैं, उसमें वो नीचे बताएंगे, ओके दिस पासवर्ड विल टेक 1 year टू क्रैक, दिस पासवर्ड विल टेक 10 centuries to crack. What does that mean? It means कि अगर आज हम इसको क्रैक करना शुरू करें, सारी पॉसिबिलिटीज़, दुनिया में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्रैक करना शुरू करें, तो उसको 10 साल लगेंगे ये वाले पासवर्ड को गैस करने में. उसका ये मतलब नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते. एवरीथिंग इज क्रैकेबल. It takes time, and for that you need a supercomputer or a fast computer. All right. Malware, it's a form of virus. So virus is just another type of malware. Any malicious software, including viruses. अब वायरस के सिम्टम्स जो बेसिकली होते हैं, फ्लैशिंग अनोइंग मैसेजेस, ये पुराने उसमें होते थे. आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें तो बार बार आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई पॉपअप्स आना शुरू हो जाते थे. यू नो दैट्स अ फॉर्म ऑफ मैलवेयर. सिस्टम आपका स्लो हो जाता है, फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, सिस्टम बूट नहीं होता है आपका बराबर से, चलते चलते कंप्यूटर बंद हो जाता है. दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ मैलवेयर. प्रोग्राम साइज इंक्रीजेस बिकॉज वायरस हैज अटैच्ड इटसेल्फ टू इट. कोई प्रोग्राम की अगर साइज 1 MB होगी, अचानक से उसकी 50 MB हो जाती है, तो वो इतना सारा डेटा कहाँ से आया? वो बिकॉज वायरस अटैच हो गया उसके साथ. So virus is more publicly used since viruses are a subset of malware. Anti-malware software. Anti-malware software typically does everything that antivirus software does, as well as identifying threats beyond just viruses. एक एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है एंटी मैलवेयर का सॉफ्टवेयर. एंटी मैलवेयर के सॉफ्टवेयर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम वो वायरस प्रोटेक्शन भी आता है और एंटी मैलवेयर भी आता है. अब के ज़माने में जो एंटीवायरस प्रोटेक्शन आ रहे हैं, दे हैव अ बिल्ट इन एंटी मैलवेयर प्रोटेक्शन एज वेल. स्पेशली जब से वो रैंसमवेयर के अटैक शुरू हुए थे, तब से दे स्टार्टेड डूइंग दैट. सो यू मस्ट कीप द डेफिनेशन डेटाबेस फाइल्स करंट. क्योंकि एंटीवायरस जो होते हैं ना,
उनके उनका एक डेटाबेस होता है, वो कॉन्स्टेंटली एंटीवायरस की कंपनी के सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। अभी फॉर एग्जांपल उसने कम्युनिकेट किया आज की तारीख को, ठीक है, और उसके अंदर नया डेटाबेस डाउनलोड हो गया आज। कल नया वायरस, दुनिया में वो कभी आया ही नहीं था, नया वायरस इजाद हुआ, और वो वायरस आया। हमने तो एंटीवायरस के जो डेटाबेस है वो तो अब एक दिन पुराना हो गया, तो जो जो टुमारो जो नया वायरस जो आया उसका डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, विच मीन्स दैट वायरस कैन इजीली बी पास्ड थ्रू अनडिटेक्टेड आपके कंप्यूटर पे। तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो एंटीवायरस का डेटाबेस है ना शुड बी अपडेटेड ऑफन। और अब जो आते हैं दे डू लाइव कम्युनिकेशन एवरी टाइम। आपके आपके नेटवर्क में कोई भी फाइल आती है वो लाइव चेक करता है एवरी फाइल। How viruses work? Virus spreading from infected system using the network or removable media. So the goal of virus is to render your system inoperable or is spread to other systems. Many viruses today are spread using email via attachments or removable media as shown in diagram. Basically होता क्या है इसके अंदर कि जो लेफ्ट के ऊपर जो इन्फेक्टेड मशीन है ये समझे कि ये इन्फेक्ट हो गई, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे इन्फेक्ट हुई, पर फॉर एग्जांपल अभी ये इन्फेक्ट होगी, इसके अंदर लेट्स से इसके अंदर वायरस है, ठीक है। फिर ये वायरस का काम ये है कि ये इज गोना स्टार्ट पिवटिंग। पिवट मतलब वो दूसरे कंप्यूटर्स के ऊपर जाना शुरू करेगा। आपके नेटवर्क के अंदर सेलफोन कनेक्ट होगा, राउटर कनेक्ट होगा, टीवी कनेक्ट होगा, मॉनिटर कनेक्ट होगा, जो भी कंप्यूटर कनेक्ट होगा, जो भी कनेक्ट होगा, नेटवर्क के ऊपर जितनी चीज़ कनेक्ट होगी ये वायरस विल ट्राई टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ योर नेटवर्क वेयर एवर इट कैन अटैच इटसेल्फ इट विल अटैच। ह्यूमन बॉडी के जो वायरस हैं इट्स अ सेम कॉन्सेप्ट। अगर आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के वायरस व्हाट दे डू, एक पार्ट आपका इन्फेक्ट हो, कैंसर के वायरस क्या है, जब हम एक वायरस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाई होकर दूसरी बॉडी के पार्ट्स में लगना शुरू हो जाते हैं until you start clearing them up, antivirus, you know, same concept। एक वायरस आ गया वो will start pivoting to other networks unless यहाँ जहाँ पे वायरस लिखा हुआ है ये क्लाउड, unless आपके नेटवर्क के अंदर प्रॉपर intrusion prevention system लगा हुआ है which is called IPS। ओके सो यहाँ पे जो जो फर्स्ट जो कंप्यूटर जो कॉम्प्रोमाइज होता है दैट कैन ऑल्सो हैपन विया एन ईमेल अटैचमेंट। यू गेट एन ईमेल विद एन अटैचमेंट सेइंग दैट ओ देयर इज एन इनवॉइस अटैच। एक्चुअली मुझे कल ही इसका एक ईमेल आया था, आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम Symantec Norton वालों ने they sent me an email with an attachment saying that you have to pay this invoice। so सबसे पहले तो मैंने चेक किया कि भाई ये ईमेल कहाँ से आया है। तो जब आप ईमेल के सेंडर को चेक करेंगे ना तो वो लिखा हुआ है जो भी norton@gmail.com। अब सोचने की बात ये है, यू शुड आस्क दिस टू योरसेल्फ, व्हाई वुड नॉर्टन सेंड मी एन ईमेल फ्रॉम जीमेल, राइट? सो दैट्स फर्स्ट थिंग यू वांट टू आस्क। सेकंड, did you buy Norton that they're asking you to pay? You don't recognize that। So a lot of things you need to look at वो email कैसी है। There are sometimes typos in the emails, spelling errors, grammatical errors उसके अंदर होते हैं which you can tell big companies like that would never make that mistake। So if some hacker especially अफ्रीका से बहुत वो hackers होते हैं, उनकी इंग्लिश से ही आपको पता चल जाएगा स्पेलिंग सही नहीं होगी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, so then you know that there is some issue with the email। Types of viruses most common are armored, coded to avoid detect। ये armored जो है वो detect नहीं होते हैं एंटीवायरस से। Companion, attached to a program, ये किसी प्रोग्राम के साथ अटैच होके आते हैं। Macro virus exploits macros into the system। Multi-partied, multiple attack। Phage has to be deleted, until आप डिलीट करें वो नहीं जाएगा। पॉलीमॉर्फिक, इट्स अ म्यूटेशन, जैसे कोविड का वायरस कैसा म्यूटेट होना शुरू हो गया, यहाँ पे ऐसे वायरसेस होते हैं जो छोटा सा होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता इट स्टार्ट्स म्यूटेटिंग टू सम अदर जायंट वायरसेस, malware, ransomware, whatever। रेट्रो वायरस,
जो है वो एंटीवायरस को अटैक करते हैं, एंड स्टेल्थ वायरस जो दिखते नहीं है, इट मूव्स फ्रॉम वन फाइल टू द अदर. So since viruses are a subset of malware and anti-malware software, typically as I said, anti-malware software will be able to identify most of the viruses and the malware. जो armored viruses हैं, to go a little bit in detail for that, is an armored virus is designed to make itself difficult to detect or analyze. Armored viruses cover themselves with protective code that stops debugger or disassembler from examining critical elements of the virus, specifically coded to make its detection difficult. The solution is to 1. Identity and 2. Educate users. जो armored viruses होते हैं ना, they are hard to detect. इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि आपके एंटीवायरस को has to communicate to the database to identify the new viruses. This is the form of armored virus. If I create a virus right now, which if I write that entire code from scratch, meaning वो कोड किसी के डेटाबेस में नहीं है, कभी किसी एंटीवायरस ने उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया है उस कोड को, then that is a brand new armored virus. I can put a special code on top so that it is undetected for time being. It will be detected eventually, but for maybe 1 million hits, it may not be detected, meaning 1 million, 10 million users might be infected before it is identified at a larger scale. So that is the idea, right? Companion virus जो है, it's a companion virus attaches itself to legitimate program and then creates a program with a different file name extension. This file may reside in your system's temporary directory. When a user types the name of the legitimate program, the companion virus executes instead of the real program. So ये बड़े चालाक viruses होते हैं, companion वाले भी. For example, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना चाह रहे हैं, ये जो कंपेनियन वायरस हैं यूजुअली क्या करते हैं, आपकी जो ओरिजिनल फाइल होती है उसके साथ ही अटैच हो जाते हैं, पर उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ना, सिट्स इन अ टेम्पररी डायरेक्टरी. आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक करते हैं तो एक्चुअल में वर्ड नहीं खुलता है, वो जो वायरस का जो वर्ड होता है ना वो एग्जीक्यूट कर जाता है, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट करता है, इट गिव्स द हैकर command and control session to your system, meaning वो आपका जो वायरस है वो आउटबाउंड कनेक्शन इनिशिएट कर देता है to the main location where the virus is coming from. So at that point वो they can access your computer very easily. Macro virus जो है, it exploits the enhancements macros made to many application program. It can infect a program like Word that has a mini basic programming language known as macros. Word के अंदर है, Excel के अंदर भी वो macros की छोटी language होती है ना. This is what it's referring to, and cause it to run a sequence of action automatically. Macro viruses are one of the fastest growing form of exploitation today. फिर multi-party virus. Multi-party virus attacks your system in multiple ways. It may attempt to infect your boot sector, infect all of your executable files, and destroy your application files. This makes it difficult or impossible for you to correct all the problem. मल्टी-पार्टी वायरस जो है, if that gets infected, वो आपके जो बूट सेक्टर है विंडोज़ के अंदर उसमें जाके बैठ जाता है, starts deleting, infecting आपकी executable files. From that point forward, it's impossible to sometimes even retrieve anything from that system. और वो जो retrieve भी आप करते हैं, that itself is corrupted. So you have to be very sure that it is contained within. Phage virus जो है, a phage virus alters program in databases, and the only way to remove this virus is to reinstall the program that are infected. For example, Microsoft Word अगर infect हो जाता है, you cannot remove that phage virus. आपको Microsoft completely remove करना पड़ेगा, कंप्यूटर को स्कैन करना पड़ेगा, and then reinstall the new version Microsoft Word, not from the same corrupted version. फिर
Polymorphic wires change form to avoid detection. These type of viruses attack your system, display a message on your computer, and delete files on your system. The virus will attempt to hide from your antivirus software. Frequently, the virus will encrypt parts of itself to avoid detection. When the virus does this, it is referred to as mutation. ये वायरस जो है encrypt कर देता है अपने आप को, जो एंटीवायरस है, they cannot really sometimes detect it, not all the time, but they cannot sometimes detect this virus, and because of that ये सिस्टम के अंदर पड़े रहते हैं और starts deleting or manipulating your files. Retrovirus जो है, it's an attack or it's a bypass to bypass the antivirus software installed on the computer. You can consider a retrovirus to be an antivirus. एंटीवायरस बेसिकली. एंटीवायरस का मतलब यह है कि वो वायरस को ख़त्म करे. एंटीवायरस इज लाइक नेगेटिव इज इक्वल्स प्लस, मींस इट्स अ वायरस. So retroviruses can directly attack your antivirus software and potentially destroy the virus definition database file. देखा, तो ये जो आपका जो एक्चुअल एंटीवायरस है ये उसी को अटैक करता है, जो प्रिवेंट करता है आपकी चीज़ को, उसको अटैक करता है और उसके डेटाबेस को ये डिस्ट्रॉय कर देता है. डेटाबेस ख़त्म तो फाइल डिटेक्शन खत्म हो गई. See, when this information is destroyed without your knowledge, you would be left with a false sense of security. The virus may also directly attack an antivirus program to create bypasses for itself. दूसरे वायरस इसमें ऐसे वो लोग क्या ये करते हैं, एंटीवायरस के अंदर एक एक्सक्लूजन होता है, एक एरिया कि यू कैन एक्सक्लूड दिस फाइल फ्रॉम स्कैन और यू कैन एक्सक्लूड दिस फोल्डर फ्रॉम स्कैन. दीज वायरसेस कैन गो इन एंड दे कैन क्रिएट देयर ओन एक्सक्लूजन्स कि भाई मैं ये वाली जो मेरी हैकिंग की फाइल है इसको स्कैन नहीं करो, इसको बाईपास करो. इफ दे कैन डू दैट देन इवन एंटीवायरस कैन नॉट पिक अप ऑन दैट. Stealth virus attempts to avoid detection by making itself from application. Detection by masking itself from application. It may attach itself to the boot sector of the hard drive or may move themselves from file A to file B during a virus scan to avoid detection. ये बड़े चालाक होते हैं वायरस, ये वाली भी very well made viruses. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने आप को मास्क करते हैं एप्लीकेशंस फ्रॉम द एप्लीकेशन. अब जब ये एंटीवायरस स्कैन कर रहा होता है कोई चीज़ तो ये एक फाइल में से निकल के दूसरी फाइल में चले जाते हैं. तो अगर एंटीवायरस ने फाइल ए को स्कैन कर रहा है तो ये फाइल बी में चले जाएंगे, और जैसे ही एंटीवायरस ने फाइल बी को स्कैन करना शुरू किया ये फाइल ए में मूव हो जाएंगे. सो दे ट्राई टू अवॉइड द स्कैन दिस वे. A signature, which is a part of the database, is an algorithm or other element of a virus that uniquely identifies it. So the database के अंदर basically ये signatures होते हैं. Signatures what is conducted inside the databases. The other types of malware is man-in-the-middle attack. Man-in-the-middle attack is very common, very highly used attacks. ठीक है, वो क्या है? Man-in-the-middle attacks is a clandestine software hiding between a server and a user, intercepting information each is trying to send to the other and sending them back and forth. The system's administrator cannot tell that there has been an attack because the information is valid. The man-in-the-middle attack software may be recording information for someone to view later, altering it or in some other way compromising the security of your system and session. The software could be outside intercepting packets, aka TCP packets, hijacking WPA is a way to prevent this. Okay, man-in-the-middle attack, जैसे कि मैंने बोला, it's a very common it's a common and very widely used attack. इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक कंप्यूटर है, let's say if you have a computer and you are trying to go to google.com. आपके कंप्यूटर में के बीच में और गूगल के बीच में एक दूसरी मशीन आ जाती है, और आप जब अपने कंप्यूटर पे गूगल टाइप करते हैं तो वो जो रिक्वेस्ट है वो मैन द मिडल का जो सर्वर होता है या मशीन होती है उसके अंदर जाता है पहले रिक्वेस्ट, और फिर वो उसको आगे सेंड करता है गूगल को. तो रिजल्ट जो है वो आपको लेजिट रिजल्ट्स ही मिलेंगे, गूगल ही मिलेगा. बट आप जितनी भी चीज़ें टाइप करेंगे, जो भी आप करेंगे, वो सब ये मैन इन द मिडल के सर्वर के थ्रू जाएगा और दे विल बी एबल टू कैप्चर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन.
So that's hard to detect sometimes. Man-in-the-middle attack can also be detected or can come up as a proxy. तो इसका मैं हो सकेगा तो I'll give you an example of how the man-in-the-middle attack works. But a very common example real quick is this. If I go here and I type in ये रहा Wireshark है ना ऊपर, hold on. So you see this is a Wireshark. Wireshark is a tool which sniffs the network or captures the network traffic. Abhi, I am connected to the Ethernet, so I'm gonna, let's say, click on this. This is sniffing. ये जो आप देख रहे हैं, this is a communication happening right now on this network. All the communication, पूरे नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन चल रही है, I can see that. अगर वो सारी कम्युनिकेशन क्लियर टेक्स्ट या पोर्ट नंबर 80 के ऊपर हो रही है, which is clear text, I can read all that. So let's see, कोई पोर्ट 80 के ऊपर कोई वेबसाइट चल रही है. देखिए ये पोर्ट 80 पे नहीं चल रही है बिकॉज आई सी HTTPS. तो आई नीड ए वेबसाइट विच वर्क्स ऑन HTTP. मुझे अगर कोई, लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड सम वेबसाइट, कि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो है वो HTTP के ऊपर नहीं चलती है आजकल. भाई देखो in.gov, आई थिंक ये इंडियाना है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो कि आई थिंक HTTP पे चल रही है. No, but you see they're forwarding to HTTPS, so no. If I can find a website which is running on HTTP, you will be able to see the communication between. So okay, yeah, this seems like a, so browse the first website. Okay, ये क्या है? cern.ch. So if I were to, let me capture the IP इसकी. cern.ch, इसकी IP है 188.184.9234, right? तो मैं अभी जाऊंगा बस, I'm just gonna click few places here and there. I don't know, there's nowhere for me to, there's nowhere to log in here or anything, but anyway, so let's say if I go here, stop this. अब ये सारा कैप्चर हो गया है, बहुत सारा डेटा कैप्चर हुआ है. And let me see if I can pull up any information on this IP. Copy key, and I think the command is ip.add. और ये फिल्टर के अंदर आप डालेंगे enter. Okay, so ये देख रहे हैं, ये जो मैं churn.io पता नहीं कौन सी वेबसाइट थी उसके ऊपर गया और मैंने अभी इसको ये पिंग किया था ना ये सारा, तो ये देखें पिंग की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है. मैंने ICMP इज़ अ पिंग प्रोटोकॉल. इस वाले कंप्यूटर से इस कंप्यूटर की IP क्या है? मे बी दैट्स व्हाट्स द करेक्ट IP, राइट? RE56 है ना. तो इस वाले सोर्स से मैं डेस्टिनेशन को पिंग किया, तो वो रिक्वेस्ट आई कैन सी. अभी इस नेटवर्क के ऊपर कोई, फॉर एग्जांपल मैं स्टारबक्स या मैकडॉनल्ड्स के अंदर बैठा हूँ, मैं मैकडॉनल्ड्स के अंदर जाके वहाँ पे वाईफाई के ऊपर मैं कनेक्ट हो जाऊँ और ये वायर शार्क ऑन कर दूँ, तो जितने भी वहाँ पे यूज़र्स जो भी कर रहे हैं मैं देख सकता हूँ. यहाँ पे कितना ईजी है ना, कितना ईजी. ये तो खाली पिंग मैंने किया. इस वेबसाइट के अंदर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन डाली नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्लेस टू लाइक लॉगिन की इन्फॉर्मेशन डालने का है नहीं इनके पास. बट इफ दे हैड एनीथिंग आई वुड सी दैट. Massachusetts, I think they go to HTTPS. So that's the idea. Okay, so Wireshark can be used for that. So let me go back here. There we go. So that would be considered that actually would not be considered 100% man in the middle attack. This would be considered a sniffing attack. We're sniffing the traffic.
Okay, man in the middle, something like this. uh, हाँ, तो ये देख रहे हैं आप जो आईपी, चले मैं आपको आईपी करके बता देता हूँ ना, ये आईपी क्या है। NS lookup 104.2170, this should be Cloudflare. Okay, Shoni, DNS is not querying this, but this 104 IP and 172 IP, it's a Cloudflare IP, and that is the man in the middle. The only difference is it's not an attack. It is a man in the middle. All the traffic, कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाएगा इस loyaltech.security.com की वेबसाइट पे, they will go through this IP. And remember, this is not the IP for this server. Actually, it's masking it. ये जो है, it's going through a man in the middle DNS server. It's not an attack, but it's a man in the middle. Now imagine the same server collecting all your information while आप access कर रहे हो. So then it becomes an attack. Metasploit is a very common example for man in the middle attack. I do have Metasploit installed, but it takes some time to get that running and stuff. So maybe in one of the days I'll show you in the practical. Then we have worms. Worms are malware that itself replicate on your network and can take over many PCs quickly. The primary method of preventing the propagation of malicious code involves the use of antivirus software. Worms are like, multiplies ho jate hain, they pivot to other network very quickly. That's a worm. Trojan is like the Trojan horse, a story from the Greek. जो ट्रोय मूवी हमने देखी है, आप किसी ने ट्रोय की जो मूवी, उसके अंदर वो लोग ट्रोजन हॉर्स एज अ गिफ्ट देते हैं उनको, पर उस हॉर्स के अंदर वो अटैक करने के लिए बैठे हुए थे. ये ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट वहां से आता है, ठीक है. And that's what they're talking about, that it comes from a Greek story from Troy. It tricks you into running an application that is advertised as doing one thing but then do something else, like open the door for worms and viruses to come in. They come under the guise of another program. वो डिसगाइज करके आते हैं, दूसरे कपड़े पहन के आते हैं, दूसरे चेहरे में आते हैं. जैसे घोड़ा दिया था, घोड़ा बन के आते हैं आप. You run that application or it will come as like a Word, Microsoft Word software installation. आप जैसे उसको रन करेंगे उसके अंदर कुछ और होगा. That's a Trojan. Ransomware often delivered through Trojan horses. तो अब ये Trojan जो है, देखिए इस ये जो malware में है ना, उसमें steps होते हैं. It's not one word and you're done. उसमें steps हैं. Trojan is an entry to the system. Trojan horse अंदर आ गया, फिर जब वो अनपैक होता है तो उसके अंदर से जो वायरसेस निकलते हैं, उसके अंदर से रैंसमवेयर निकलते हैं. तो ये जो रैंसमवेयर जो है ना, दे आर डिलीवर्ड, उसको डिलीवरी कौन करता है? ट्रोजन डज द डिलीवरी फॉर रैंसमवेयर, ऑफन डिलीवर्ड थ्रू ट्रोजन हॉर्सेस. Holds your data, it holds your data until you pay some money to the bad folks, encrypts the files and forces you to pay for the decryption key. रैंसमवेयर जब कॉमन हुआ था थोड़े कितने साल पहले, वो आपके सिस्टम के अंदर घुस के आपकी जितनी भी डेटा है, जितना भी फाइल, उसको सब इनक्रिप्ट कर देता है. तो जैसे ही आप फाइल को खोलें तो अगर उस फाइल के अंदर आपने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, वो आपको सब दिखेगा मशीन लैंग्वेज. वो 1 2 3 नहीं दिखेगा, ABCD नहीं दिखेगा, कोई वर्ड्स नहीं दिखेंगे, वो सब इनक्रिप्ट हो जाएगा. विच विल इट्स गोना बी अ बाइनरी लैंग्वेज. तो उसको करना, वो हो जाता है इनक्रिप्ट, इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन. फिर उसको करना पड़ता है डीक्रिप्ट. डीक्रिप्ट के लिए यू नीड अ की, जैसे दरवाजा खोलने के लिए यू नीड अ की ना, तो यू नीड अ की टू डीक्रिप्ट दिस इन ऑर्डर टू गेट योर फाइल्स बैक. और वो फाइल्स आपको नहीं देते हैं अनलेस यू गिव देम ए मनी. तो दैट्स वेयर द ransomware comes from. The name ransom means that they hold your file for money. फिर है रूटकिट्स.
Malicious software that are notorious for hiding things from the operating system by retaining administrative level access. They hide in the operating system in plain sight like System32 folder and modify parts of the kernel. The best defense you have is to monitor what your system is doing and catch the rootkit in the process of installation. Rootkit जो है form of virus जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स अपने पास ले लेता है. जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स वो लेता है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज स्टार्ट bypassing this rootkit. वो समझते हैं कि यार ये भी एडमिन है, मीनिंग इसके पास तो फुल एक्सेस है, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस पर्सन, सो दैट्स फाइन. That's the rootkit type of virus. Then we have spyware. Spyware, rather than self-replicating like viruses and worms, spyware is spread to machines by users who inadvertently ask for it. The users often don't know they have asked for it, but have done so by downloading other programs, visiting infected websites, and so on. So spyware then monitors your activity and sends unsolicited adware. ये सारे steps हैं. These are steps. Hacking is not easy. You have to go to one step. You have to create Trojan. Trojan needs to be delivered. Once that is delivered, ransomware is created. Ransomware is created. Then you need spyware. You need a lot of things in order to do one thing. Spyware जो है वो basically आपको by going to different websites, जो bad websites होती है, ये spyware आपके system पे install हो जाते हैं. Then they start monitoring your activity. And then based on those activities they send you the adware. Adware also have viruses. Adware क्या होते हैं? जो you get sometimes a prompt, you click over here and you'll get a coupon, or click over here you'll get 30% discount. You click over there, as soon as you do that वो install हो जाता है आपके system के अंदर. Spoofing attack. Spoofing attack is an attempt by someone or something to masquerade as someone else. Three most popular spoofing attacks are IP spoofing, ARP spoofing and DNS spoofing. जैसे मैंने पहले बात की थी, IP spoofing हम IP को स्पूफ कर सकते हैं किसी और की IP के जैसे. ARP spoofing कर सकते हैं, DNS spoofing. These are three commonly used spoofing. IP spoofing में क्या होता है? The goal is to make the data look as if it came from a trusted host when it didn't, thus spoofing the IP address of the sending host. IP वो चेंज करके ऐसे IP डाल देते हैं जैसे कि वो legit source से आई है, but वो spoofing है, उसकी जो actual IP होती है something else होती है. ARP spoofing जो है is also known as ARP poisoning. The media access control, which is the MAC address of the data, is faked. Router can then be fooled to transmit data thinking it's from a valid source. जैसे मैंने आपको बताया था ARP का जो मैंने Linux के अंदर टाइप की थी उसके अंदर MAC एड्रेस जो शो करता था, that's what that could be an ARP spoofing way to test. अगर आपके सिस्टम जब आप ARP के टेबल देखते हैं, that was the ARP table, उसके अंदर आपने if you see a MAC address which you know that is not your MAC address, then you should know that that is a MAC spoofing. Or if you see that there are two MAC addresses under the same, then that's also MAC spoofing, because आपका तो सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे और आपके ही सिस्टम के जैसा दूसरा MAC address आ गया. Usually network router के अंदर there is an option to prevent this. DNS spoofing is the DNS server is given information about a name server that it thinks it's legitimate when it's not. This can send users to a website other than the one to which they wanted to go, read out mail, or do any other type of redirection for which the data from the DNS server is used to determine a destination. For example, DNS spoofing is very it's highly used, and it's been sometimes people cannot detect it. Basically क्या होता है, आप अगर ये DNS spoofing आपके सिस्टम में अगर आ गई है, so what's gonna happen that you type in on your browser google.com, so आप every time google.com के ऊपर टाइप करेंगे तो आपकी वेबसाइट जाएगी msn.com पे. फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी फायरफॉक्स में, गूगल क्रोम में, जिसमें भी टाइप करें वो जाएगी उसमें. मैं क्विकली बताऊंगा जल्दी से कि अपने ये थोड़ी लंबी है. तो
डीएनएस स्पूफिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है कि वो आपके जो डीएनएस के जो होस्ट रिकॉर्ड्स है ना वो चेंज कर देता है, एंड दोज होस्ट्स आर डन फ्रॉम हियर. सो मैं मैन्युअली इसको ओवरराइड करूंगा, सो देन यू विल गेट एन आइडिया. ड्राइवर्स etc होस्ट्स, ये देख रहे हैं, ये होस्ट जो है इट कंट्रोल्स वेयर यू नीड टू गो. सो लेट्स से गूगल की आईपी क्या है, लेट मी सी. So I put the IP. Every time this IP comes, I should go to, let's say, google.com, save, and let me open up a private. Okay, so my loyal tag, when we type that, it goes there. Now let me type google.com. I need to, hold on, I need to clear the cache. Guys, tree. सो अभी होगा क्या इसमें कि मैं जब गूगल टाइप करूँगा ना, सो वो फिर जाएगा CNN.com के ऊपर. द रीज़न वाई इट्स नॉट गोइंग देयर राइट नाउ इज़ बिकॉज आई हैव कैश इन हियर. तो आई विल नीड टू रिमूव द कैश, बिकॉज कैश जो है it usually will be removed after a certain time. यार इसमें कहाँ है, sorry, there we go. So another reason that this might not work is because I'm running Cisco in behind, and I have, मेरे पास है ना ओपन DNS के DNS वो लगे हुए हैं ना. So maybe it not work because वो, even though basically what I'm telling here कि भाई if I type in google.com it should go to this IP, but this IP belongs to CNN.com. तो इन सिनेरियोज में क्या होगा कि यहाँ पे होगी हैकर की IP, एंड देन URL होगा google.com या जो भी होगा URL होगा इधर, यू विल हैव दैट URL. अभी एवरी टाइम आप गूगल पे जाएंगे तो वो हैकर की IP पे चला जाएगा. That's the way right now it's not working because I am behind the DNS protection. Because I'm behind the DNS protection, DNS spoofing is not possible on this. But if I'm overriding it, it should work. But let me just double check because I know that I have a cache in here. But let's see if I go back. So it's actually routing through the OpenDNS, so that's fine. But this is the concept. जो यहाँ पे जो है ना, this is where the entry is made usually,
and आपकी DNS spoofing happens from here. This is the starting point right here. Let me remove it because I don't want this in there. Okay, then next we have zero day attack. आजकल zero day attack बहुत आ रहे हैं. When a hole is found in a web browser or other software and attackers begin exploiting it the very day it is discovered by the developer. By bypassing the 1 to 2 day response time that many software providers need to put out a patch once the hole has been found. Zero day attack is, that's what it means. आजकल zero day attack is like done like this. Zero day attack mean कि सॉफ्टवेयर के अंदर कोई vulnerability अगर आज आई है, attackers are exploiting that issue the same day. That is the zero day attack, and that has been happening for a lot. Like Fortinet का zero day attack अभी zero day attack आया था for SSL VPN, and it started exploiting the very same day. Zombie or botnet. Botnet describes malicious software running on a zombie infected computer and under the control of a bot herder. Bots are a form of software that runs automatically and autonomously. For example, Google uses the Google bot to find web pages. अच्छे बॉट होते हैं, बैड बॉट्स भी होते हैं. गूगल बॉट्स जो है वो आपके वेबसाइट को इंडेक्स करना शुरू करते हैं. इट्स लाइक स्पाइडर्स क्रॉल ऑन दैट टू रीड ऑल द डेटा इन योर वेबसाइट. दैट दोज आर आल्सो बॉट्स. दूसरे बॉट्स ये होते हैं जो कॉन्स्टेंटली अटैक सेंड करते रहते हैं. उनका काम ये होता है. बॉट्स इज एनीथिंग विच इज ऑटोमेटेड एंड ऑटोनोमसली, मीनिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है. इट्स स्क्रिप्टेड एंड इट्स ऑटोमेटिकली डज इट्स जॉब. दैट्स बॉटनेट. इसका तोड़ क्या है? इसकी, how can we prevent that? Creating a strong password, that's one first key. It should be as long as 10 characters minimum होने चाहिए. ये experts ये recommend करते हैं. A total of 62 characters available with which to construct a password. उसके अंदर आपको special character डालने के, bracket, dollar signs, pound, numbers डालने के, uppercase, lowercase. By doing that, you're basically reducing the chances of brute force attack and increasing the time of how long it will take any machine to crack that password. जो मैंने अभी word password list की बात की थी ना, that's what it means. Require password and expiration. Require password for all accounts. कोई account में ना password नहीं require करते ना, you just click on it and you're in. That's not a good practice. Always require password for all account, and उसके अंदर expiration date भी होती है कि expire this password after 3 months, 1 month, and then force me to create a new password. These are all best practices. Account management also allows restricting user permissions, setting logging time restrictions, disabling the guest account, locking an account after a certain number of failed attempts, configuring a screen lock, etc. तो गेस्ट अकाउंट तो अगर आप प्रोडक्शन में हैं, बिजनेस में गेस्ट अकाउंट तो होनी नहीं चाहिए. दैट इज़ अ वे फॉर एनीवन टू एंटर इनटू योर सिस्टम. सेकंड, स्क्रीन आपकी आफ्टर 5-10 मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी शुड बी लॉग्ड आउट. दैट शुड बी अ कॉमन प्रैक्टिस. अगर आप, इफ यू आर स्टेपिंग अवे फ्रॉम योर सिस्टम, you should log that out immediately. These are all best practices. Then we have DLP, also called data loss prevention. Data loss prevention system monitors the content of systems, workstations, server, and networks to make sure that key content is not deleted or removed. They also monitor who's using the data, looking for unauthorized access, and transmitting the data. DLP system shares commonalities with network intrusion prevention system. Tripwire and MyDLP are ideal examples. DLP जो है, data loss prevention, it's a policy based and a software based program जो पूरे सिस्टम को मॉनिटर करता है एवरी टाइम कि अगर कोई यूज़र है बहुत सारा या कोई सेट अमाउंट ऑफ डेटा डिलीट कर देता है, दिस विल प्रिवेंट इट. काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे नो दैट दे आर अबाउट टू लीव द कंपनी एंड दे वांट टू हार्म द कंपनी. So when they have access to everything, so they will delete everything.
So this software prevents that. It identifies when a large amount of, depending on the settings you have set, if a large amount of data is being deleted immediately, then it will block it. Or a large amount of data is being transferred somewhere to the cloud, to the USB, to another computer. If a large amount of data is being transferred, this will stop it. DLP is commonly used especially for security companies. Dusra solution, what you can do is make sure you have antivirus and anti-malware software installed on your system. If अगर आप किसी कंपनी के अंदर है, make sure कि there is a firewall there. इसके if we have enough time today or maybe the next online video, I will show you how to build that free firewall on a small device. उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, उसको सेटअप कैसे करते हैं, and how you can put that firewall into your home network. It's something is better than nothing basically. Then we have make sure that you have anti-spyware installed, anti-spyware software. Directory permissions are not just open, wide open. User को educate करना is very important because most of the जो viruses हैं, it comes from user malpractice by clicking certain softwares or certain emails and things like that. Principle of least privilege, इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर कोई काम कर रहा है तो उसको फाइनेंस के डॉक्यूमेंट की एक्सेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो फाइनेंस में काम कर रहा है उनको एचआर के डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज कॉल्ड लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस और लैप्स और लीस्ट एक्सेस प्रिविलेज. जितना एक्सेस चाहिए या ज़रूरत है उतना ही दो, बाकी सारा बंद करो. दैट्स बेसिकली व्हाट इट मीन्स. And then email filtering, make sure that you have a proper email filtering. For businesses, you need some type of email filtering. Otherwise, you will get a lot of spams and things like that. Firewall. ये firewall को मैंने पहले भी cover किया था. Packet filter, basically, it passes or blocks traffic. Firewall is very simple concept. Yes or no. That's it. There is no maybe. फायरवॉल में मे बी नहीं है. फायरवॉल में या तो यस है या तो नो है. कोई ट्रैफिक आया या तो वो उसको जाने देगा या नहीं जाने देगा, बस बेस्ड ऑन द पॉलिसी यू क्रिएट. नाउ फायरवॉल प्रॉक्सी, इंटरमीडिएटरी बिटवीन नेटवर्क्स. प्रॉक्सी फायरवॉल जो है दो नेटवर्क के बीच के अंदर जो बैठता है, दैट्स अ प्रॉक्सी फायरवॉल. Stateful inspection firewall. So I will come to that. Now firewall is a standalone firewall, a personal and a host based or a network based firewall. ठीक है. Standalone firewall जो है is a host based usually. Let's go with that. Microsoft Windows के अंदर जो firewall built in आता है, जो that is a host based firewall, वो सिर्फ एक डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है. अगर मेरे विंडोज़ के अंदर फायरवॉल लगा हुआ है तो वो सिर्फ मेरे एक मशीन को प्रोटेक्ट करेगा. बट जो नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल है वो सारे नेटवर्क अंडर जितने भी नेटवर्क है, इट विल प्रोटेक्ट ऑल ऑफ दैट. यूजुअली राउटर्स, लेयर 3 राउटर्स आर मेंट टू डू दैट. द बेसिक पर्पस ऑफ अ फायरवॉल इज टू आइसोलेट वन नेटवर्क फ्रॉम अनदर. Comes as an appliance, like a freestanding device that operate in a largely self-contained manner, like और लेकिन FortiGate और Cisco के जो राउटर फायरवॉल्स आते हैं वो, and requiring less maintenance and support than a server based product. अगर वही फायरवॉल को आप सर्वर पे डाल देते हैं, then you have to manage the server and things like that. But अगर वो सिर्फ एक फायरवॉल का ही डिवाइस है, then there's not much managing on that. Firewalls function as one or more of the following. Packet filter, proxy filter. Packet जो है वो passes or blocks the traffic to specific address based on the type of application and the port used. For example, allow port 80 and block port 23. इसका मतलब ये हुआ allow port 80 मतलब जब भी मैं कोई वेबसाइट के ऊपर जाऊँ 80 and 443 should be allowed. 443 is for HTTPS. मुझे Facebook में जाना है, Google में जाना है. Most of the major websites these days they use HTTPS. No one uses port 80. If anyone is using port 80, they are highly vulnerable right now. Firewall के अंदर, but by default it's common practice to open up port 80 and 443 because अगर ये पोर्ट्स आप नहीं खोलेंगे तो कोई भी वेबसाइट के ऊपर जा नहीं सकेगा. लेकिन दूसरी कॉमन प्रैक्टिस ये है कि टेलनेट पोर्ट विच इज पोर्ट नंबर 23 शुड बी ब्लॉक्ड. टेलनेट इज अ क्लियर टेक्स्ट टर्मिनल.
उसके अंदर जो भी आप टाइप करेंगे पासवर्ड वासवर्ड जो भी, इट्स वेरी इजीली रीडेबल ऑन दैट वायर शार्क आई शोड यू. I can actually see the passwords being typed in there. So firewall is block it or don't block it. In this case you block certain things. Proxy firewalls जो है, they are used to process requests from an outside network. The proxy firewall examines the data and makes rule-based decisions about whether the request should be forwarded or refused. A proxy firewall typically uses two network interface cards. This type of firewall is referred to as dual-homed firewall. One of the card is connected to the outside network and the other is connected to the internal network. इसकी आगे पिक्चर आएगी तो मैं और ज़रा बताऊंगा आपको. Stateful inspection firewall. As a matter of fact, चल मैं आता हूँ वापस. Most of the devices used in networks don't keep track of how information is routed or used. After a packet is passed, the packet and path are forgotten. In stateful inspection or stateful packet filtering, records are kept using a state table that tracks every communication channel and can deny packets that were not requested from the internal network. फायरवॉल के अंदर आते हैं स्टेटफुल जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है और एक आता है स्टेटलेस इंस्पेक्शन. स्टेटफुल जो है बेसिकली जितना भी ट्रैफिक पास होता है उसके थ्रू जितना भी ट्रैफिक राउट होता है वो उसकी मेमोरी टेबल के अंदर रखता है. तो स्टेटफुल फायरवॉल्स आर स्मार्टर, वो स्मार्ट होते हैं, दैट दे आर कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स ऑल्सो. पर जो नेक्स्ट जो है ये पिक्चर, दिस इज कॉल्ड अ डुअल होम फायरवॉल. इसके अंदर दिस इज कंसिडर्ड ए प्रॉक्सी फायरवॉल. नेटवर्क ए में लगा हुआ है निक ए, नेटवर्क बी में लगा हुआ है निक बी. तो इसके अंदर दो ईथरनेट कार्ड्स हैं इस फायरवॉल में. एक ईथरनेट का जो है वो फॉर एग्जांपल होगा वैन इंटरनेट या आउटसाइड इंटरनेट. दूसरा जो होगा वो होगा इंटरनल इंटरनेट. And you can connect that, make sure routing or IP forwarding is disabled, and you can connect that directly. ये होता है, this is one of the type of proxy filtering. जैसे वो छोटा सा जो बॉक्स पड़ा हुआ है जिसके अंदर 2 Ethernet है, something like that. Solutions. I think I covered this already, but anti-spyware जो है, it's Microsoft Windows Defender आ रहे हैं फ्री में. So those are the type of anti-spyware. Directory permission I mentioned, don't give open permissions to any folders and files. User education के बारे में I already talked about it, and least privilege and email filtering as well. So yeah, let's go to the next. VPN, virtual private network. A VPN is a private network connection, often secure connection that occurs through a public network, insecure network. That's a VPN. It's a layer added on top of the unprotected internet. And इसका थोड़ा मैं और डिफाइन करूंगा थोड़ी देर में. हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर क्लाइंट, ये दो चीज में आता है. हार्डवेयर बेस्ड VPN भी आते हैं और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी आते हैं. VPN concentrator encrypts data before it gets to a VPN client. So for example, आपने डाउनलोड किया NordVPN. NordVPN is a software based VPN. ठीक है. अब आप गए किसी दूसरी कंट्री में, आप गए, एक्चुअली फॉरगेट अबाउट कंट्री, यू वेंट टू मैकडोनल्ड्स. मैकडोनल्ड्स के वाईफाई के अंदर आप बैठ गए. वाईफाई जो है इज अनप्रोटेक्टेड, सब कुछ देख सकते हैं. एनीवन कैन सी एनीथिंग दे वांट. सो इट्स जो इंटरनेट जा रहा है उसके ऊपर, let me draw it so maybe you can understand on that. So just think of this is the where's my little cloud? There we go. Make that internet. Okay, so that's your internet.
दैट्स योर कंप्यूटर। अभी ये कंप्यूटर को इंटरनेट पे जाना है। ये कंप्यूटर जो है कनेक्टेड है वाईफाई से। ये वाईफाई के सिग्नल आ गए, ठीक है। अभी सारा जो डेटा इसके ऊपर जा रहा है, ये ग्रीन लाइन के ऊपर जो डेटा जा रहा है, दिस इज ऑल unencrypted, meaning anyone can see that. McDonald's का internet is not secure. When the VPN comes in, let's type in VPN, ठीक है। So what the VPN does, कंप्यूटर के अंदर ये VPN सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ये VPN starts encrypting everything। वो ट्रैफिक तो इसके ऊपर ही भेजता है, सेम इंटरनेट पे, कोई अलग से इंटरनेट नहीं बनता है, सेम उसमें बनता है, पर वो क्लियर टेक्स्ट नहीं होता है, वो जंबल ऐसे लगी ऐसा एक इट्स ऑल मशीन लैंग्वेज। इट्स लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस फॉर एग्जांपल। सो इंटरनेट की लाइन तो सेम है, ट्रैफिक भी सेम है, बट नो वन कैन रीड इट, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वीपीएन। नाउ लेट्स जस्ट से कि यहाँ पे बीच में कोई बैठा हुआ है, another computer, or we call this hacker, सही है। and let's just say maybe this hacker has a key for this VPN. I mean it's highly unlikely, but let's just assume that, and वो भी इसी नेटवर्क पे कनेक्टेड है, बट अपेरेंटली ये जो आपके पास जो VPN का जो टनल इंस्टॉल हुआ है, उसके पास उसकी की है। तो अब जितना भी जो स्क्रैम्बल ट्रैफिक है, ये उसको डाउनलोड करके ओपन कर सकता है आराम से, ये सारा ट्रैफिक ही कैन रीड। सो VPN became useless for you at this point. So basically what I'm trying to get at, there is no 100% security ever. It's the user education which is really needed, ठीक है ना। So this is a very basic concept. In now उस हैकर को आपकी की मिले, those are chances are very slim, but it can happen. If it's a targeted attack, अगर कोई आपको definitely नुकसान पहुंचाना चाहता है, if it's a targeted attack, this can happen very easily. Getting the certificate and all that, getting into your system may not be that hard. ठीक है, so that is how the VPN works. वर्कस्टेशन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? ओके ये वर्कस्टेशन की है। सेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ऑलवेज रिक्वायर पासवर्ड, रिस्ट्रिक्ट यूजर परमिशन, चेंज डिफॉल्ट यूजर नेम। एडमिन तो यूज ही नहीं करने का कभी भी, हमेशा यूजर नेम चेंज कर देने का, बिकॉज एडमिन इज अ कॉमन यूजर नेम एंड ब्रूट फोर्स अटैक आर यूजुअली डन ऑन द रेगुलर usernames, default usernames. Change default username, disable the guest account always, make the screensaver require password. Screensaver आता है तो make sure कि requires the password to turn back. Disable auto run functionality. कोई भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रन नहीं होने चाहिए, उसको उस फीचर को डिसेबल कर देने का, नहीं तो वायरस भी आपकी खुद ही रन करना शुरू हो जाएगा, सही है ना। विंडोज यूजर्स एंड ग्रुप्स, विंडोज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं, सर्वर के अंदर इवन मोर इससे ज़्यादा होते हैं, बट फॉर विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर इज़ द प्राइमरी यूज़र, उसके अंदर उसके हैज़ ऑल द एक्सेस, ठीक है। बट पावर यूजर्स जो है इज अ मेंबर इन दिस ग्रुप आर गिवन रीड राइट परमिशन टू द सिस्टम, allowing them to install most softwares but keeping them from changing key operating system file. As such, it would be a good group for those who need to test software, such as programmers and junior administrators. Power user can do limited things, but they cannot delete like system files. They cannot change system files and things like that. लेकिन जो regular छोटे मोटे जो softwares होते हैं, they can install that and they can run that as a power user and they will work. Guest account तो आपको सबको पता ही है क्या guest account है. They have limited rights to it, but guest accounts are not good to have, especially if you're in a work environment. Standard user is a member of this group, has read-write permission to their own profile. They cannot modify system-wide setting. जो यूज़र है वो यूज़र को उसके खुद के यूज़र का एक्सेस है फाइल का, किसी और के फाइल का एक्सेस नहीं है. Now, share permissions versus NTFS.
Share permissions apply only when a user is accessing a file or folder through the network. Local permissions and attributes are used to protect the file when the user is local. And share permissions are directory level only, while NTFS permissions extend to the files. So with that, the FAT and FAT32, you जैसे कि NTFS is a partition level. पहले के ज़माने में आता था FAT, FAT and FAT32. You do not have the ability to assign extended or extensible permissions, and the user sitting at the console effectively is the owner of all resources on the system. As such, they can add, change, delete or any data file. पहले जो FAT32 थे ना, उसके अंदर आप permissions यूजर बेस पे डिवाइड नहीं कर सकते थे फ्रॉम on a partition level. But NTFS are able to protect you at the file level. एक एक फाइल को आप अलग अलग एक्सेस दे सकते हैं यूजर के अंदर. जैसे यूजर नंबर ए जो है और यूजर नंबर बी, वो एक दूसरे के प्रोफाइल्स के अंदर नहीं जा सकते हैं. ये है NTFS का फायदा. And share permissions can be applied to the directory level only. NTFS permission basically is allow, not allow or deny. Allow is the group members can perform that specified action. Not allow के अंदर does not allow user to perform that action, that specific action. और deny के अंदर वो completely prohibits the user to do anything. And inherent basically जो folder की जो permission होती है ना, what they're talking about. For instance, if I go to this properties, security, and if I go to edit, oh sorry, this is on a Linux server, this is not gonna work. Yeah, I need a different one. So if I go to, let's go to somewhere local, I need to go to, so that's a Bluetooth finder, whatever. Security, advanced. You see the inheritance they're talking about right here? Inheritance is part of the permissions. इसमें इसका मतलब ये है कि हम मैं ह्यूमन के हिसाब से एग्जांपल देता हूँ, देन यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड. आपके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है एंड if they die, then you as a son or a daughter inherit that property. And then if you die, then your son or your daughter will inherit that property. That is the inheritance. कहाँ से वो आई inheritance? पीछे से, आबाओ अजदाद से आई, पीछे पीछे जाते जाओ वहाँ से आई. This is what this means, inheritance. ये जो प्राइमरी जो है, जो मेन है inheritance, वो चाइल्ड को देता है. इसमें भी चाइल्ड ही आएगा वर्ड. It gives it to your child. There's a parent है object, parent object and the child object. So just remember of inheritance in that manner. It's a permission set on a folder are inherited down through the subfolders unless otherwise changed. So इसके अंदर जितने भी फोल्डर होंगे ना, जैसे कि ये फोल्डर है, फोल्डर का नाम है ब्लूटूथ फोल्डर, तो अगर मैं इसमें डिसेबल कर दूंगा इनहेरिटेंस, तो ब्लूटूथ फोल्डर के अंदर जो दूसरे फोल्डर होंगे उसको वो सेम राइट्स नहीं होंगे. मुझे एक फोल्डर में जाके सबको एक अलग राइट्स देने पड़ेंगे. पर अगर मैं इनहेरिटेंस ऑन कर देता हूं तो जो भी मैं परमिशन लेवल इस ये ब्लूटूथ फोल्डर में डालूंगा, वही परमिशन उसके सारे सब फोल्डर्स में भी आना शुरू हो जाएगी. सो दैट्स व्हाट दैट इनहेरिटेंस मींस हियर. ओके, सो लेट्स क्लोज दिस. Move versus copy. Copy creates a new entity and move simply relocates it.
कॉपी जो है वो उसको डुप्लीकेट बना देती है। मूव जो है, कट पेस्ट जो हम करते हैं, दैट्स अ मूव ऑप्शन। ठीक है। NTFS directory permission, full control, modify, read and execute, list folder contents, read and write. So FAT32 जो कि पुराना सिस्टम था, file system was relatively stable if the systems that were controlling it kept running. It didn't do well when the power went out or the system crashed unexpectedly. So FAT32 were good until जो प्रोग्राम उसको रन कर रहे थे अगर वही क्रैश हो गए, then everything crashes with it. NTFS has a transaction tracking system that allows Windows NT to back out of any disk operations that were in progress when it crashed or lost power. So NTFS handles it a little bit better by backing out from the disk operation. अगर disk के अंदर file का issue है, it will still be most likely going on. With NTFS, files, directories, and volumes can each have their own security tracked using active control list, which is also called ACLs. ACLs specify permission levels: read, write, execute, whatever. Microsoft strongly recommends that all network shares be established using NTFS and not FAT30 or FAT32. It's possible to convert FAT32 to NTFS without losing data, but you cannot do the operation in reverse. NTFS से FAT32 आप convert नहीं कर सकते, but FAT32 से NTFS कर सकते हैं convert. Yes. NTFS file permission, I think we went over this already. Administrative shares and local shares. Administrative shares are created on servers running Windows on the network for administrative purpose, such as Windows Server 2012, 2008, 16, 2019, whatever. They always end with a $sign to make them hidden. जो एडमिनिस्ट्रेटिव के जो शेयर्स होते हैं ना, फोल्डर्स, उसके अंदर डॉलर की साइन लगी हुई होती है टू मेक देम हिडन. Hidden attributes, the files with this attribute don't appear when a user displays a directory listing. You should not change this attribute on a system file unless absolutely necessary. System files are required for operating system to function. If they are visible, users might delete them, perhaps they are thinking that they can clear some of the disk space by deleting the file. So काफ़ी system files जो है ना वो hidden files होती हैं. वो hidden files जो हैं वो हर system के अंदर होती है and usually वो hidden होती है. So अगर आप जाएं PC के अंदर, you go to this PC, यहाँ पे कुछ और नहीं दिख रहा है. But if you go to, let's say, view, options, and you go here, show hidden files. You see, मैं जैसे इसको करूँगा, आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स दिखेंगे आपको. देखो कहाँ से है, फोल्डर्स भी है, प्रोग्राम डेटा आ गया, ये आ गया. सही है. पर hide empty drive, hide folder, I can hide protect, I can uncheck all of this and see what we get. ये देखिए और आ गई. ये देखें ना, सिस्टम फाइल्स है सारी, बैकअप, बूट, पता नहीं क्या क्या. ये फाइल बाय डिफॉल्ट इन्होंने हाइड की हुई है. द रीजन वाई, सो देन यूजर्स डोंट डिलीट इट बाय मिस्टेक, क्योंकि ये डिलीट हो गई तो फिर सिस्टम नहीं चलेगा ना. सो दैट्स वाई. Then we have single sign-on, which is also called SSO. SSO gives user access to all of the application and systems that they need when they log on Active Directory. Single sign, यहाँ पे इन्होंने बराबर एक्सप्लेन नहीं किया, बस सिंगल साइन ऑन जो है उसका मतलब ये है कि आप एक बार पासवर्ड डालें और सारी एप्लीकेशन आपको एक्सेसिबल हो रही है. तो जैसे कि काफ़ी जो कंपनीज हैं, आप उनके आउटलुक के ईमेल में जाएं तो ईमेल में आप एक बार पासवर्ड डाल दिया, फिर वहाँ से अगर आपको आपका कंपनी का पेरोल एक्सेस करना है, कंपनी का आपका पे चेक आपको एक्सेस करना है, तो आप कंपनी की ही दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है. वो पासवर्ड जो है आपने जो माइक्रोसॉफ्ट में डाला है, आप ऑथोराइज हो गए हैं. अब सिंगल साइन ऑन जो है वो एक सेशन क्रिएट कर देता है. वो सेशन इसको बताता है कि भाई I am good to go to the other page. That's the concept of single sign-on. Next is BitLocker and BitLocker to go. BitLocker allows you to use drive encryption to protect files, including those needed for startup and log on.
BitLocker to go is for removable drives and prevents access from unauthorized access. BitLocker काफ़ी कॉमन है. ये आपके सारी हार्ड ड्राइव को इनक्रिप्ट कर सकता है इफ़ यू वांट, आपके फोल्डर को या फाइल को इनक्रिप्ट कर सकता है, एंड देन सेट्स द पासवर्ड ताकि ओनली यू कैन एक्सेस. अगर आपका लैपटॉप चोरी भी हो जाता है, and if someone don't have that password, they cannot get the data. They can get the laptop, remove the hard drive and put a new hard drive and use it, but आपका जो data है that will be saved. ठीक है ना. Mobile device security, screen locks, known as most of the Apple phones है, Android के phone है, after 30 seconds or 1 minute or 5 minute वो screen lock हो जाती है. Apple and Android mobile devices include a requisite passcode locking, passcode होती है, and then it's set by default, but the user on the go is encouraged to enable passcode lock. It's actually off by default, but anyway, वो जो screen lock हो जाती है, it looks for a facial recognition or your fingerprinting or passcode as mobile device security. Biometric authentication, आपका fingerprint होता है. Remote wipes, several things you can do with that. iPhone जो है, Find My iPhone together with iCloud allows multiple mobile devices and Macs to be located if powered on and connected to the internet. Allows remote lock for lost devices. Remote wipe can return the system to factory default. iPhone के अंदर ये ऑप्शन है जो Find My Phone, अगर आप उसमें रजिस्टर करते हैं, देन अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो वो आप ऑनलाइन जाके iCloud में जाके अपने फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं. अगर चोरी हो गया है देन आप रिमोटली आपके फ़ोन को पूरा वाइप कर सकते हैं. लेकिन एंड्रॉयड का क्या करें, एंड्रॉयड में नहीं अगर ये फीचर, तो एक सॉफ्टवेयर आते हैं इसके लिए, कॉल्ड वन ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉल्ड PREY. वो आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर दें, सो दैट सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली लिटिल बिट बेटर देन आईफोन. आप उससे रिमोट वाइप कर सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे लोकेशन क्या है आपके फ़ोन की, आप सारा डेटा रिमोटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि आपका डेटा तो लॉस्ट हो गया ना, तो यू नीड दैट बेट डेटा. आप रिमोटली आपके कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड देन यू कैन वाइप योर सिस्टम. You can provide the geolocation to the cops and then they can recover the phones for you too. So Prey is a very good software when it comes to mobile device security. Destruction and disposal methods. Low level format versus standard format. The standard format is a standard format accomplished using the operating system format utility or similar, can mark space occupied by files as available for new files without truly deleting what was there. It does not guarantee that the information is not on the disk and if it is recoverable or not. A low-level format typically only accomplished in the factory can be performed on the system, or a utility can be used to completely wipe the disk clean. This process helps ensure that information does not fall into the wrong hands. Must be performed even before a drive can be partitioned. Low level format जो है basically हम ड्राइव के ऊपर जाके राइट क्लिक करके फॉर्मेट जो करते हैं, that's called the low level format. ये फॉर्मेट बेसिकली आपको स्पेस तो दे देता है, बट दैट डजंट मीन कि वो जो फॉर्मेट किया, दैट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट रिट्रीव दैट लॉस्ट डेटा. व्हेन वी डिस्पोज, जब हम कोई हार्ड ड्राइव थ्रो अवे करते हैं, वी वांट टू मेक श्योर कि हम उसको प्रॉपरली फॉर्मेट करें. देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि उसको फॉर्मेट करते हैं एट अ मिलिट्री ग्रेड. ओके, बेसिकली फॉर्मेट जो है ना, कोई चीज़ रिमूव नहीं करता है. देयर इज नो सच थिंग एज डिलीटिंग इन रियलिटी. दिस इज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स गोइंग टू द हार्ड ड्राइव. जो हाई लेवल के जो फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं ना, सॉफ्टवेयर बेस या हार्डवेयर बेस व्हाटएवर, वो इतना गार्बेज उसके ऊपर डालना शुरू कर देते हैं कि यू कैन नॉट रिट्रीव द डेटा. सो दैट्स द फॉर्मेट. You can still recover it, but what you will recover is gibberish. You cannot understand. So the military grade formatting is that. Another thing what you can do is electromagnetic gun जो आती है ना, जो या electromagnetic static,
If you put your hard drive next to the electromagnetic field, hard drive is gonna go wipe clean. उसमें फिर कोई डेटा होगा ही नहीं. तो अमूमन ऐसी गन आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन जो आप हार्ड ड्राइव के ऊपर रख के ऑन करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक निकलेगा उसमें से एंड पूरी हार्ड ड्राइव वाइप हो जाएगी. दैट इज अनरिकवरेबल ऑल्सो. Hard drive sanitation and sanitation methods. Hard drive sanitation method is basically advanced encryption standard AES cryptography are often built into the hard drive. Hard drive erase can also be run but does not guarantee that files can't be retrieved. So again, वो sanitation के अंदर भी same है concept, but there is still a possibility that it may be retrieved. Third option is the physical destruction. Shred the hard drive. बड़े बड़े मशीन आते हैं जो लिटरली हार्ड ड्राइव को काटती हैं, ड्रिल कर दें, हैमर से डिस्ट्रॉय कर दें, डिगॉजिंग या इंसिनरेशन मींस जला दें उसको. तो फिजिकल डिस्ट्रक्शन के अंदर यू कैन डू, आई मीन आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी ऑफ दिस हियर, but the safest way for anyone to do is get a software to delete to format it properly. For instance, आप सर्च कर लें यहाँ पे free hard drive format tool. इसी के अंदर I remember there was a military grade free version available. Disk management, nope, that's not what we're looking for. Let's try this. So काफ़ी tools हैं, you can see like right here, you can download these tools as well. यहाँ ये वाला tool है देखें. If you pay more, then you can get more, but these type of tools can actually erase your hard drive in a well manner. Securing a SOHO network, small office and home office network. उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं to secure these type of network, especially अगर आपका छोटा सा बिजनेस है, होम बेस्ड ऑफिस बिजनेस है, उसमें क्या कर सकते हैं. मेक श्योर आप SSID को चेंज करें, डिफॉल्ट SSID नहीं रखने की. डिसेबल SSID ब्रॉडकास्ट. अगर आप वाईफाई यूज नहीं कर रहे हैं देन इट्स बेटर टू डिसेबल द SSID completely. डिसेबल DHCP और यूज रिजर्वेशंस. अब घर छोटे नेटवर्क के अंदर डिसेबलिंग DHCP इज नॉट अ बिग डील. आप स्टैटिक आईपी एक उसको लगा सकते हैं, बट दिस इज वेरी सिक्योरिंग इट, बट इट्स एक्स्ट्रा वर्क. कर सकते हैं, but they're recommending or they're suggesting that you should disable DHCP. When you disable DHCP, फिर आपको एक एक लैपटॉप को, सेल फोन को, जो भी है, मैन्युअली IP असाइन करनी पड़ेगी उसको जाके. use MAC filtering. Okay, that's good. Use IP filtering. Use strongest security available on the access point, meaning कि AES जो है, AES cryptography जो है वो यूज़ करनी चाहिए, तो it's harder to crack. Change the static security keys every 2 to 4 weeks. Security keys जो आपके पासवर्ड्स हैं उसको आप चेंज करें, but I don't think anyone does that as much. Limit the user accounts that can use wireless connectivity. ओनली लिमिटेड यूजर्स को वायरलेस कनेक्टिविटी दे, सबको ना दे. स्पेशली गेस्ट को अगर आप देते हैं तो उनको आपके सेम प्रोडक्शन नेटवर्क पे नहीं रखें, उसको डिफरेंट नेटवर्क पे रखें आप. गेस्ट को अपने, अगर आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आपकी मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट IP चल रही है वाईफाई की 192.168.1.1, तो गेस्ट को भी उसी IP पे नहीं चलाएं आप. वो गेस्ट को दूसरी दे दें IP 192.168.2.1 और मेक श्योर ये दो सबनेट के बीच में कम्युनिकेशन ना हो. That's one way to secure it. Use a pre-authentication system such as Radius. तो
रेडियस सर्वर इंशाल्लाह हम आगे जाके हम अगर पूरा नेटवर्क बनाएंगे ना, तो आई विल शो यू व्हाट हाउ द रेडियस वर्क्स, बट बेसिकली दिस इज जस्ट अ सर्वर। रेडियस सर्वर जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्टेड होता है, तो यूज़र जो है वो अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालेगा तो रेडियस उसको ऑथेंटिकेट करेगा। सो इट्स अ सिक्योरिटी फीचर, जस्ट थिंक ऑफ दैट फॉर नाउ। Use remote access filter. Use IPsec tunnel over the wireless link. IPsec tunnel VPN meaning that's what it means. Turn down the signal strength. सिग्नल ज़्यादा पावरफुल नहीं रखें आप, क्योंकि अगर आप छोटे जैसे इस वाले ऑफिस में है, इस वाले ऑफिस के अंदर इस बहुत सारे ऑफिस हैं दूसरे, तो वाईफाई एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा, तो वहाँ पे बैठा बैठा कोई भी उस पर अटैक इनिशिएट कर सकता है, और वो अनेक अटैक इनिशिएट कर सकता है और घर पे जा सकता है। घर पे जाके वो 1 साल लगेगा, जितने साल में भी वो क्रैक होगा, इवेंचुअली क्रैक हो ही जाएगा ना। तो वो बोल रहे हैं कि सिग्नल की स्ट्रेंथ कम रखें आप, ताकि वो खाली एक रूम के अंदर हो या जहाँ पे आपको चाहिए सिर्फ वहाँ पे वो हो, तो उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं हैकिंग के। रिमूव वायरलेस एक्सेस फ्रॉम योर लैन। ये तो बोल रहा है कि पूरा वायरलेस एक्सेस ही ख़त्म कर दो। वायर्ड नेटवर्क इज़ हार्डर टू हैक फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, वो फिजिकली आना पड़ेगा ना किसी को। हाँ, अगर वायर्ड है सारे इंटरनेट कनेक्टेड, देन बाहर से बैठा बैठा कोई नहीं कर सकता इतनी इजीली। कर सकता है, आई डोंट वांट से 100%, बिकॉज वो इंटरनेट के थ्रू कर सकता है, पर ये बाहर बैठा बैठा कोई नहीं कर सकता, रूम के बाहर बैठा बैठा कोई नहीं कर सकता। एंटेना एक्सेस पॉइंट प्लेसमेंट, लिमिट ईच और रीच और नेटवर्क सेम थिंग। रेडियो पावर लेवल्स, उसको पावर ज़रा कम रखें तो ज़्यादा लोगों के रीच के अंदर नहीं पहुंचता है। So these are common things. It really depends on the network or the environment you're working for. Every company cannot implement this. इसके अलावा different दूसरे implementations आते हैं which you can do, but for small companies it's hard to do this. So the best thing is to implement a proper next gen firewall and let that firewall control who gets onto your network and who gets off the network, who is allowed on the network and who's not. The next generation firewall will do that for you. Yeah, that one. Yeah. Okay. So this was the end of chapter number 19, which was about security. Hopefully we will cover security practical in next video, or what I will do is I will create a recorded version of security training or the practicals which you guys can go through. Okay. For now this chapter ends here. If you guys like the video, please make sure you like and subscribe and hit that bell notification icon. If you have any questions, any concerns or any comments, you can always type them in the comment section or the chat section.